लास्ट लेक्चर में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हमने की थी, ठीक है, किस टाइप का होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आज उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है दिस वन। चलो, अगर ये क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें बेसिकली दिया क्या है, हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखता है तो उसके इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स दिखना चाहिए, मतलब सिर्फ वाई अपॉन एक्स दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ सारी टर्म को। अगर मैं सारी टर्म को एक्स से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वन प्लस टू टाइम्स वाई अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स। तो मुझे ये फॉर्म मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, सिर्फ वाई अपॉन एक्स दिख रहा है। ठीक है, फिर हम एज्यूम करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, सो वाई इज इक्वल टू एक्स वी। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो y इज इक्वल टू v प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज x dv बाई dx। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर वन, dy बाई dx, सॉरी, इक्वेशन नंबर टू। सो वन एंड टू implies, वन एंड टू implies what we get, dy बाई, जहां पे dy बाई dx दिख रहा है वहां पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। ओके, और जहां पे y अपॉन x दिख रहा है वहां पे मैं पुट करूंगा v। तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx विच इज इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो v है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो वी गेट x इंटू dv बाई dx विच इज इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी। एलसीएम लेते हैं, दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड, सो व्हाट वी गेट, फाइन, वी गेट x इंटू dv बाई dx विच इज इक्वल टू वन प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। सो वी गेट x into dv by dx which is equal to, this will be v, so we get v square plus v plus वन अपॉन माइनस, अगर मैं कॉमन ले लू इसमें से, सो वी गेट v माइनस वन। चलो v को अलग करते हैं, x को अलग करते हैं, सो व्हाट वी गेट v माइनस वन अपॉन v स्क्वायर प्लस वन dv which is equal to minus as it is वन अपॉन x dx, राइट। चलो नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा टू वी प्लस वन, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे v माइनस वी, तो हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सो वी गेट टू वी माइनस टू अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन
dv which is equal to minus 1 by x dx. Now integrating both side, right? यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं. Now स्प्लिट करते हैं. So 1 by 2 integration of, it is v plus 1. Okay, and this is plus 1. So integration of, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं. Fine. Integration of 2v minus 2 upon v square plus v plus 1 dv is equal to 1 integration of 1 upon x dx. स्प्लिट करते हैं. So we get 1 by 2 integration of 2v upon v square plus v plus 1 dv. Sorry, v square plus v plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? v square plus v plus 1 का डेरिवेटिव होगा 2v plus 1. ओके, ओके. तो मुझे यहाँ पे 2v plus 1 चाहिए और मुझे दिया 2v minus 2. तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2v plus 1 dv minus 1 by 2 integration of minus 3 upon v square plus v plus 1 dv is equal to minus 1 integration of 1 by x dx. See, 2v minus 2 था, v square plus v plus 1 का डेरिवेटिव होता है 2v plus 1. तो 2v plus 1 की जगह अगर मुझे लिखना हो तो मैं minus 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? plus 1 minus 3. So 2v plus 1 एक साथ ले लिया, minus 3 यहाँ पे भेज दिया. ठीक है, चलो. अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है. So it will be 1 by 2 log mod v square plus v plus 1 minus 3 by 2 as it is, right? Minus 3 by 2 as it is, integration of dv upon v square plus v plus 1 which is equal to minus log mod x so इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं. So what we get? वन बाई टू log mod v square plus v plus 1 plus log mod x is equal to 3 by 2 integration of dv upon v square plus v plus 1. Now ये जो 1 by 2 पावर है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे. लास्ट टर्म क्या आएगी? मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म. दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, तो 1 by 4 which is our last term. So what we get? Log of under root of v square plus v plus 1
प्लस लॉग है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v, लास्ट टर्म इज 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे लगेगी लॉग की प्रॉपर्टी, सो वी गेट लॉग ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 which is equal to 3/2 integration of dv upon it will be v plus 1/2 whole square, 4 ones are 4 minus 1 plus 3/4, so ultimately we get log of x into under root of v square plus v plus 1 is equal to 3/2 1 upon a, that is 1 upon root 3/2 tan inverse x upon a, that is v plus 1/2 upon root 3/2 plus c. So these two and these two will be cancel out, LCM. So these two and these two also cancel out. So what we get, and v will be y upon x. So we get log of x into under root of y square upon x square plus y upon x plus 1 3. This will be root 3 and this will be root 3. Okay. So root 3 tan inverse 2v plus 1 upon root 3 plus c, substitute the value of v. So log of x into under root of y square upon x square plus y upon x plus 1 which is equal to root 3 tan inverse v is nothing but y upon x plus 1 upon root 3 plus c. This is your answer. एंड फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी सिंप्लीफाई करना हो, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाना तो इसको हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, एक्स एक्स कट हो सकता है, यहाँ पे एक्स एलसीएम आ सकता है, एक्स नीचे जा सकता है, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ओके, चलो थैंक यू।